So good afternoon to our classmates and our guide, Dr. Trina Trivedi ma'am. Today we are going to explain on the topic skewness and kurtosis. So I will introduce to my teammates. So team 21 consists of Prapti Indulkar, Nidhi Yadav, Navya Reddy, myself Adarsh Nair and Mihir Maurya, and under our guide of Dr. Trina Trivedi. So probability. अभी हम थोड़ा बेसिक्स देखेंगे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के, थोड़े ब्रशअप करेंगे हम. उसके बाद हम थोड़े इंजीनियरिंग लेवल पे देखें. तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक प्रोसेस का आउटकम प्रेडिक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं. एक चांस यूज करते हैं हम एक इवेंट का. For example, height of population of the world, rolling a dice, tossing a coin or average report of students based on performance. अभी इसमें से रोलिंग ऑफ डाइस और टॉसिंग अ कॉइन तो हम लोग को बहुत फेमिलियर है. एक बार टॉस करेगा मतलब कौन सा नंबर आएगा या हेड या टेल आएगा वो हम प्रेडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की मदद से. स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स पहली बात तो इकोनॉमिक्स, स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट ऑफिस में यूज करते हैं क्योंकि उनका देखना पड़ता है कि प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है. और स्टैटिस्टिक्स में अभी 3 पार्ट है, मीन, मॉड और वेरिएंस. मीन का डेफिनेशन है मीन इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ नंबर्स. मतलब जितने भी आउटकम्स है उन सबका एवरेज होता है मीन, विच इज डिनोटेड बाय एक्स बार. और जब भी आप उसको फॉर्मूला में देखेंगे तो समेशन एक्स, यानी कि जितने भी आउटकम को सम करेंगे वो आता है समेशन एक्स, और एन इज द नंबर ऑफ आउटकम. मॉड जितने बार वो आउटकम सेम वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है वो हमारा मॉड होता है. फॉर एग्जाम्पल अब एक 5 का सेट है, 5 7 7 6 2 करके एक 5 का सेट है. तो 7 7 इज रिपीटेड ट्वाइस, so that will be our mod. और variance in probability theory and statistics, variance is an exception of the square deviation of a random variable from its mean. उसको डिनोट किया जाता है s से, and the formula is s square is equal to summation of xi minus x bar the whole square upon n minus 1, where xi is the initial frequency and x bar is the mean of the outcome and n is the number of outcomes. ये 3 फॉर्मूला के बेस में ही हमारा स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे है. So I will hand over the further topics to Prapti. Thank you. So good afternoon, Tina ma'am and my classmates. My name is Prapti Indulkar and my serial number is 33. So in the previous slide, we have seen the basics of statistics and probability. Now let's go into the topic moment. So the definition of moment is that it is used to define the peculiarity of a frequency distribution. That is, we can measure the central tendency of a data, the dispersion, asymmetry, and the pickedness of the curve. So now moments are divided into 2 parts: raw moment, which is about any assumed mean, and central moment, which is about a mean. Raw moment is denoted by mu I dash, whereas the central moment is denoted by mu I. Now let us see the formulas for grouped and ungrouped data. So in the table we have the formulas for group data. So the central moment for first movement is mu1 equals to summation f into x minus x bar the whole raised to 1 upon n. Second movement mu2 is equal to summation of f into x minus x bar the whole square upon n. Mu3 summation of f into x minus x bar the whole cube upon n. Mu4, that is fourth movement, summation of f into x minus x bar the whole raised to 4 upon n. Now here n is nothing but the total of frequency and x is a mid value. Now we will see the similar formula for raw moments. So
First raw moment is mu1 dash, which is equal to summation of f into x minus a the whole raised to 1 upon n. Mu2 dash, summation of f into x minus a the whole square upon n. Mu3 dash is equal to summation of f into x minus a the whole cube upon n. And mu4 dash is equal to summation of f into x minus a the whole raised to 4 upon n. Here a is nothing but a assuming. Now let us see the formulas for ungrouped data. So the formulas for ungrouped data for first moment, central movement, mu1 is equal to summation of x minus x bar the whole raised to 1 upon n. Mu2 is equal to summation of x minus x bar the whole square upon n. Mu3 is equal to summation of x minus x bar the whole raised to cube upon n. Mu4 is equal to summation of x minus x bar raised to 4 upon n. For raw moment, it is mu1 dash is equal to summation of x minus a the whole raised to 1 upon n. Mu2 dash is equal to summation of x minus a the whole square upon n. Mu3 dash is equal to summation of x minus a the whole cube upon n. And mu4 dash is equal to summation of x minus a the whole raised to 4 upon n. In ungrouped data, the n is number of observations. So as we have seen the formulas, now let us go to the numericals of moment. So here we have a question. Commute the first four central movement from the following data. So in the data we have given a class interval which is in a range of 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. Whereas the frequency which is denoted by f is given as 1, 3, 4 and 2. So the first column consists of a class interval which is already given in a question. Second column consists of a frequency which is also given in a question. Now in the third column, as we can see, there is a mid value x, which is nothing but the summation of class intervals divided by 2. So we can see in the first row there is a class interval of 0 to 10. So when we add 10 plus 0 divided by 2, we get the mid value as 5. Similarly, for the class interval 10 to 20, when we add 10 plus 20 divided by 2, which gives us 15. And which is followed by row number third and fourth. Now we will see the next column, that is f of x, f into x. So f into x is nothing but the multiplication of column number 2 and column number 3. That is, for first row it is 5 into 1, which is 5. Second, 15 into 3, which is 45, and so on. Now we will add all the summation of f of x and we get the value as 220. And similarly for frequency, when we add all those frequencies, we will get it 10. Now in the below we can see a x bar, which is nothing but the summation of f of x upon summation of f. So summation of f of x, which we have find out, is 220 divided by the summation of f, that is 10. So we get x bar is equal to 22. Now in the fifth column we can see x minus x bar, which is nothing but x, which is mid value 5, minus x bar, which we have already find out, that is 22. So 5 minus 22, which is minus 17. In the next row we can see 15 minus 22, which is minus 7, and so on. We can add all the 4 x minus x bar values and we get a summation which is minus 8. Now in the next column we can see f of x minus x bar, which will be used in a further formula to find out the central movement. Similarly, we have add all the central movements and we have got a summation that is 0. Similarly we will solve it for f of x in x minus x bar the whole square, f into x minus x bar the whole cube, and f into x minus x bar the whole raised to 4. Now let us see the formula for central movement. So in the earlier slides, table slide, we have seen the formulas for central movement. So when we calculate the central movement for first, mu1, which is equal to summation of f into x minus x bar raised to n,
We have found out the summation of f into x minus x bar, which is 0, and frequency, total number of frequency n, which is 10. When we divide 0 upon 10, we get 0. Similarly, for mu2, summation of f into x minus x bar the whole square upon n, which is equal to minus 62 upon 10, which is equal to minus 6.2. Mu3, summation of f into x minus x bar the whole cube upon n, which is equal to minus 1440 upon 10, which is equal to minus 144. And mu4, summation of f into x minus x bar the whole raised to 4 upon n, which is equal to minus 27663 upon 10, which is equal to minus 2766.3. So thank you. Now the next topic, that is skewness, will be explained by Navya. Thank you, Prapti. And first of all, a very good afternoon to respected Tina Trivedi ma'am and my dear fellow classmates. I'm Navya Reddy. My serial number is 93. So now I am going to explain you about skewness. So here we go. Skewness is a measure of the degree of asymmetry of a frequency distribution. When the frequency distribution curve is not normal, then it is asymmetric. This asymmetry of the frequency distribution curve is measured by skewness, which means in a graph, our data is given, we represent it by a curve. There we come in contact with some asymmetrical curve. So to calculate that asymmetrical curve, we use a method which is skewness. In this, mean, median, and mode will not be equal to each other, which means they are not equal to the given data. Next slide. Here there are different curves. First is normal distribution, which means they are equally distributed from the center, and it is also called as symmetrical distribution also, since both are symmetry to each other. And it is called as bell curve, since the normal distribution curve is similar to the bell. And here, next one is positive skew. As we can see that the tail is pointing towards the right hand side, which is positive side. So that's why it is called as positive skew. And next one is negative skew. As here also we can see the tail is pointing towards the left hand side, negative direction. So that's why it is called as negative skew. Next. And here we are going to differentiate mean, median, and mode. In the first diagram, which is negative skewed, here we can see that mean and median are heading towards the negative direction. So mean is lesser than median, lesser than mode. And in normal, all are equal. Mean is equals to median is equals to mode. And in positive skew, mean is greater than median is greater than mode. So here there are types of skewnesses and formulas. These formulas are very important for NTA exams. So the first one is curl Pearson coefficient of skewness. It is represented by SK, and the formula is mean minus mode upon SD. SD means standard deviation. It is denoted by sigma. Another formula for it is 3 into mean minus median upon SD. Another type is Bowley's coefficient of skewness. It is represented by SQ, which is equals to Q3 minus 2 into MD plus Q1 upon Q3 minus Q1. Here Q1 means total plus 1 upon 4, Q2 means total plus 1 upon 2, and Q3 means total plus 1 upon 4 into 3. And here MD means median. In Kelly's skewness, it is represented by SP. Here SP is equals to P90 minus 2 into P50 plus P10 upon P90 minus P10. Here P90 means 90th percentile, P50 means 50th percentile, and P10 means 10th percentile. Next. Now we are going to solve a numerical on skewness. So the question is, compute the curl Pearson's coefficient of skewness from the following data. And the data is given as height in inches and number of persons. And the values are 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, and 65. And in number of persons, 10, 18, 30, 42, 35, 28, 68. And so, next. So, we are going to solve this by finding the values of mean, standard deviation, and mode. So, we divided the table into 5 columns. So, the first column is consists of height, which is denoted by X.
and the value is 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, and 65 as mentioned in the question. And here we will be taking the assumed mean A. So we can take any value. So we are going to take 61. In the second column, it is u is equal to x minus 61. U means deviation and x is height and minus 61 is a. So by substituting the values, we get following values, which is minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, and 4. And the third column is consist of number of percent, which is denoted by f, which means frequency. And the values are 10, 18, 30, 42, 35, 28, 16, and 8. And the summation of these values are 187, which will be denoted by capital N. And the fourth column is consist of S into U, which is multiplication of frequency and deviation. And here we can see multiplying minus 3 into 10, which will be equal to minus 30. And same will be followed for all the rows. So the values are minus 30, minus 36, minus 30, 0, 36, 56, 58, 32, and the summation of these values are 75. And the fifth column is consist of f into u square, which means frequency into deviation square. So by multiplying this, we get the value as 90, 72, 30, 0, 35, 112, 144, 128. The summation of these values is 611. And in the right box, you can see the formula for mean is x bar is equals to a plus summation of f into u upon n into h. So by substituting these values, we get, which is equals to a is given as 61 plus 75, which is summation of f into u upon and the summation of n, summation of f, which is equals to 187. So by calculating, we get the value as 61.4. And next we are going to solve standard deviation. So standard deviation is equals to root over summation of f into u square upon n minus summation of f into u upon n the whole square. And by substituting these values, which is 611 upon 187 minus 75 upon 187 the whole square, by calculating this, we get the value as 1.76. And now we are going to calculate the mode. And to find mode, we note that the height is a continuous variable. It is assumed that the height has been measured under the approximation that a measurement on height, that is, example, greater than 58 less than 58.5 is taken as 58 inches, while a measurement greater than or equal to 58.5 but less than 59 is taken as 59 inches. So the data is written as height in inches and number of persons, which is 57.5 to 58.5, 58.5 to 59.5, 59.5 to 60.5, 60.5 to 61.5, 61.5 to 62.5, 62.5 to 63.5, 63.5 to 64.5, and 64.5 to 65.5. And the number of person, which is frequency, we see the values. Values are given as 10, 18, 30, 42, 35, 28, 16, and 8. Here, the highest value is 48. Previous slide. Here in the number of persons, the highest value is 48. So it is denoted by F1, which is frequency of model class, and corresponding interval is 60.5 minus 61.5, which is a model class. And above 42 is 30, which is denoted by F0, is preceding the model class. And the below 35 is denoted by F2, which is frequency of succeeding the model class. Next. So by inception, we have got the model class is 60.5 minus 5 to 61.5. Thus, we have formula for mode is L plus S1 minus S0 upon 2 into S1 minus S0 minus S2 into H. So L means lower limit from the model class, which is 60.5, and F1, F0 values we have got, which is F1 is equals to 42, F0 is equals to 30, F2 is equals to 35, and H is 1. H means the difference between the intervals, which is 1. So by substituting these values, we get 60.5 plus 12 upon 19 into 1. We get, by calculating,
we get mode as 61.13. Hence, the curl Pearson coefficient of skewness will be, the formula is Sk is equals to mean minus mode upon standard deviation. So since we have got the mean value of 61.5 minus mode is 61.13 upon standard deviation value is 1.76. So by calculating, we get Sk is equals to 0.15. And since the value is positive, the distribution is positively skewed. So we have concluded the curl. So this is how curl Pearson skewness is calculated, and hence we have concluded our topic skewness. And the next topic on kurtosis will be explained by Mihir Moria. Hello everybody, myself Mihir Moria. My serial number is 57 and I am here to present about the topic kurtosis. Kurtosis, the extent to which distribution is peaked or flat is called kurtosis. देखो इसमें हमें सिर्फ सिमेट्री के अक्रॉस, जैसे स्क्यूनेस में हम लोग ने देखा था, कर्व अगर जितना सिमेट्री के अक्रॉस स्प्रेड हो रहा है, तो अगर राइट साइड में स्प्रेड हो रहा है तो वो है पॉजिटिव स्क्यू, लेफ्ट में हो रहा है तो वो नेगेटिव हो रहा है. तो इसमें वही हमें ग्राफ के सिमेट्री के अक्रॉस वो कितना फ्लैट है, मतलब कितना नीचे और कितना पीक्ड है, कितना ऊपर है, वो देखना है. और बीटा 2 जो यहाँ पे दिया है, वो बीटा 2 है, वो पैरामीटर होता है स्क्यूनेस मेजर करने का. तो बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर. तो लेफ्ट साइड में आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा मेसोकार्टिक का, उसमें बीटा 2 का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 3 है, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. और बॉटम में यहाँ पे ये जो लेप्टोकार्टिक का ग्राफ है वो आप लोग को पीक दिख रहा है, जो बीटा 2 से जो इसमें बीटा 2 का वैल्यू है वो 3 से ज्यादा होगा. और जो राइट साइड में जो ग्राफ दिख रहा है प्लेटिकार्टिक का, वो बीटा 2 है, उसमें 3 का वैल्यू बीटा 2 का वैल्यू 3 से कम है, तो वो प्लेटिकार्टिक कहलाएगा. जनरलाइजेशन देखते हैं सबका. आदर्श नेक्स्ट स्लाइड कर. देखो ये जो रेड वाला कर्व है वो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लेप्टोकार्टिक कर्व है वो अपना ग्रीन वाला कर्व है, और जो ब्लू वाला कर्व है वो अपना प्लेटिकार्टिक है. तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल कर्व होगा अपना, उसमें बीटा 2 का वैल्यू है वो जो 3 है, और जो प्लेटिकार्टिक है, जो ब्लू वाला कर्व है, वो थोड़ा नॉर्मल कर्व से नीचे है, इसका मतलब वो 3 से कम है, तो बीटा 2 इज लेस देन 3. और जो नॉर्मल कर्व के ऊपर वाला कर्व है जो ग्रीन कलर का है लेप्टोकार्टिक, वो बीटा 2 का वैल्यू 3 से उससे ज्यादा है, इसलिए वो थोड़ा पीकेड है और एज कंपेयर टू प्लेटिकार्टिक जो एकदम बॉटम पे फ्लैट है. नेक्स्ट स्लाइड. कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस. इसमें बीटा 2 के बारे में थोड़ा समझते हैं. बीटा 2 इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर. और यहाँ पे एक और पैरामीटर है गामा 2 विच इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3. जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, बीटा 2 का जो वैल्यू है वो 3 से अगर कम है तो प्लेटिकार्टिक है, बीटा 2 का वैल्यू अगर 3 है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल और मेसोकार्टिक. मेसोकार्टिक को अपन नॉर्मल भी बोल सकते हैं. इफ बीटा 2 का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकार्टिक, ये सबसे ज्यादा पीक्ड होगा. अब यहाँ पे लिखा है इफ गामा 2 इज इक्वल टू 0 इट इज मेसोकार्टिक, if gamma 2 is less than 0 it is platycartic, if gamma 2 is greater than 0 it is leptocartic. चलो इसको ये फॉर्मूला से अंडरस्टैंड करते हैं. गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3. फर्स्ट कंडीशन गामा 2 इज इक्वल टू 0, तो गामा 2 मेसोकार्टिक के लिए बीटा 2 का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, तो 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो गामा 2 का वैल्यू क्या आया 0. अब गामा 2 इज लेस देन 0 तो प्लेटिकार्टिक. तो जैसे अभी यहाँ पे 2 लिया तो 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू -1, तो -1 इज लेस देन 0, तो ये प्लेटिकार्टिक आएगा. इफ गामा 2 इज ग्रेटर देन 0 तो लेप्टोकार्टिक में बीटा 2 का वैल्यू 3 से ज्यादा होता है, तो 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, और 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये गामा 2 का ये सारे वैल्यूज इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे. μ2 is equal to second moment about the mean and μ4 is equal to fourth moment about the mean. ये हम लोग ने मोमेंट्स में स्टडी किया है. आदर्श नेक्स्ट स्लाइड. फॉर्मूला फॉर कर्टोसिस. कर्टोसिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x minus x bar to the power 4
अपॉन n माइनस वन इंटू एस टू द पावर 4। अब एक एक करके सारे टर्म समझते हैं। x अपना जो है क्लास का मिड वैल्यू होता है। एग्जांपल यहाँ पे क्लास दे रखा है 2 to 4, तो 2 to 4 का मिड वैल्यू क्या आएगा? 2, 3 और 4, तो 3 इसका मिड वैल्यू है, तो x के बदले 3 आएगा। और x बार क्या होगा? मीन होएगा सबका फ्रीक्वेंसी का। और n होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और s होता है अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सबका फोर्थ पावर लेना अपने को, ठीक है। एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। कैलकुलेट सैंपल कर्टोसिस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। इसमें हमें क्लास दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। 2 to 4 की का फ्रीक्वेंसी है 3, 4 to 6 का है 4, 6 to 8 का है 2 और 8 to 10 का है 1। आगे न्यूमेरिकल देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अभी इसमें पहले टैबुलर फॉर्मेट समझते हैं। इसमें हमें क्लास गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम पहले मिड वैल्यू इसका फाइंड करेंगे। तो 2 to 4 का मिड वैल्यू क्या आएगा? 3, 4 to 6 का क्या आएगा? 5, यानी 4, 5, 6, 6 और 8 का क्या आएगा? 7 और 8 to 10 का आएगा 9। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2 to 4 का 3, 4 to 6 का 4, 6 to 8 का 6 to 8 का 2 और 8 to 10 का 1। अब हमें समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालना है, यानी 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो हमें n का वैल्यू 10 मिल गया। अब fx यानी द फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9, 5 × 4 विच इज इक्वल टू 20, 7 × 2 विच इज इक्वल टू 14, 9 × 1 विच इज इक्वल टू 9। अब हमें समेशन ऑफ fx करना है, तो जब हम समेशन ऑफ fx करेंगे तो इसका वैल्यू हमें 52 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x माइनस एक्स बार टू द पावर 1, कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? पावर 1 हो गया। x माइनस एक्स बार टू द पावर 2, x माइनस एक्स बार टू द पावर 3, x माइनस एक्स बार टू द पावर 4। ये सब हमें क्यों दिया है? x माइनस एक्स बार टू द पावर 1 ये मोमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं। x माइनस एक्स बार टू द पावर 2 ये टर्म जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन में कहीं ना कहीं हमें इंट्रोड्यूस होने वाला है, इसलिए हमें इसका समेशन वैल्यूज यूज करना पड़ेगा। x माइनस एक्स बार टू द पावर 3 ये टर्म स्क्यूनेस के फॉर्मूला में यूज होता है, और x माइनस एक्स बार टू द पावर 4 जो कर्टोसिस में यूज होता है, इसलिए हमें ये सारे टर्म्स का वैल्यूज निकालना पड़ेगा। x माइनस एक्स बार टू द पावर 1 है, ओके। तो 3 इंटू 1 मिनट 3 माइनस 5.2 विच इज इक्वल टू 2.2 माइनस 2.2। तो ये 5.2 कैसे आया? जो 5.2 है वो अपना मीन है, यानी समेशन मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अपन ने बेसिक्स में देखा था, समेशन fx अपॉन n, यानी 52/10 करेंगे जब अपन, तो अपने को आंसर आएगा 5.2। तो x हमें x में से x बार निकालना है, यानी 3 में से उसका मीन निकालना है। मीन अपना 5.2 है और x अपना जो है वो मिड वैल्यू है, तो 3 माइनस 5.2 विच इज इक्वल टू माइनस 2.2। अब इसमें 5 अपना मिड वैल्यू है और मीन अपना 5.2 है, तो 5 माइनस 5.2 विच इज इक्वल टू माइनस 0.2। ऐसे ही 7 माइनस 5.2 विच इज इक्वल टू 1.8 एंड 9 माइनस 5.2 विच इज इक्वल टू 3.8। इसमें हम लोगों ने समेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि एज सच इसका हमें कोई यूज नहीं है। अभी x माइनस एक्स बार टू द पावर 2, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार टू द पावर 1 का वैल्यू अपने पास माइनस 2.2 है, तो हमें इसी वैल्यू का स्क्वायर करना है, यानी 3 इंटू माइनस 2.2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14.52, 4 इंटू माइनस 0.2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.16, 2 इंटू 1.8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6.48, 1 इंटू 3.8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14.44। अब हमें ये सब का जो समेशन x माइनस एक्स बार का जो यूज है वो स्टैंडर्ड डिविएशन में यूज होने वाला है, तो इन सब का समेशन करने पे हमें आएगा 35.6। अब हमें x माइनस एक्स बार टू द पावर 3 का वैल्यू यूज करना है, तो इसमें स्क्वायर का टर्म अपने पास है, यानी 14.52 इंटू माइनस 2.2 विच इज इक्वल टू माइनस 31.944, 0.16 जो इसका स्क्वायर्ड वैल्यू है इंटू माइनस 0.2 करेंगे तो इसका क्यूब रूट का वैल्यू आएगा, यानी माइनस 0.032, 6.48 इंटू 1.8 करेंगे तो कितना आएगा? 11.664, 14.44 इंटू 3.8 विच इज इक्वल टू 54.872। अब ये सबका जो टर्म है x माइनस एक्स बार टू द पावर 3 वो स्क्यूनेस में यूज होता है फॉर्मूला, तो इसका वैल्यू समेशन आएगा 34.56। अब x माइनस एक्स बार टू द पावर 4, ये ध्यान से देखो आप लोग,
देखो अभी जैसे 2 to the power 4 सबको पता है 16 होता है, तो अपन ऐसा लिखते हैं 2 into 2 into 2 into 2, यानी 4 बार 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो तब जाके अपने को 16 आएगा। बट अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना 8 into 2 विच इज इक्वल टू 16। तो ये अपने पास जो 31.944 है ना, ये इसका क्यूब रूट है। तो अपन क्यूब रूट इंटू यानी -31.944 इंटू -2.2 जब करेंगे तो अपने को आंसर आएगा 70.27। वैसे सिमिलरली 0 पॉइंट माइनस ऑफ 0.032 इंटू माइनस ऑफ 0.2 विच इज इक्वल टू 0.064। फिर थर्ड में 11.664 इंटू 1.8 करेंगे तो आंसर आएगा 20.98। 54.872 इंटू 3.8 करेंगे तो 208.5 आएगा। फिर ये जो x माइनस एक्स बार टू द पावर 4 है, इन सबको ऐड करना पड़ेगा 299.79, तब जाके ये टर्म हम कर्टोसिस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसे हम लोग ने पहले ही मीन निकाल लिया था, समेशन एफ एक्स होता है मीन समेशन एफ एक्स अपॉन एक्स, यानी 52/n, n का वैल्यू 10 था तो 52/10 यानी 5.2 आ गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे तो समेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n फ्रीक्वेंसी ऑफ मिड वैल्यू माइनस एक्स बार यानी मीन, ये पावर स्क्वायर जो देखो हम लोग ने टेबुलर फॉर्मेट में कैलकुलेट किया था ना, x माइनस एक्स बार टू द पावर 2, उसका वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे अपॉन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n इंटू फ्रीक्वेंसी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला में ये सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, रूट ऑफ 35.6 अपॉन 10। आदर्श पीछे स्लाइड में दिखा दे 35.6 का आंसर अपना। ये देखो समेशन x माइनस एक्स बार टू द पावर 2 का वैल्यू 35.6 आया था अपने को, तो वही वैल्यू हम लोग ने वो फॉर्मूला में पुट किया है। आदर्श नेक्स्ट स्लाइड। 35.6 अपॉन 10 उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो अपने को आंसर आएगा 1.88। ये अपना स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आ गया 1.88। अब कर्टोसिस करेंगे, कर्टोसिस कैलकुलेट करेंगे। कर्टोसिस का फॉर्मूला समेशन x माइनस एक्स बार टू द पावर 4 अपॉन n माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन टू द पावर 4। अब हमें x माइनस एक्स बार टू द पावर 4 का वैल्यू अपने पास टेबुलर फॉर्मेट से निकल गया है 299.79। 299.79 अपने को इसका वैल्यू समेशन मिल चुका है, तो वही वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 299.79 अपॉन n माइनस 1, यानी n का वैल्यू अपने पास 10 आया था समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, तो 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 कितना बचा 9 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू कितना था 1.88 उसका पावर 4। जब ये पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.12 and the further applications will be explained by my friend Nidhi Yadav. Thank you. So thank you, Mihir. A very good afternoon to all. Myself, Nidhi Yadav. As my fellow mate had explained the topic skewness and kurtosis, I am going to explain what are the basic difference between this topic. So first, we are focusing on the meaning of both the topic. So skewness alludes the tendency of a distribution that determines symmetry about the mean, and kurtosis means the measure of respective sharpness of the curve in the frequency distribution. Secondly, we are focusing on what it is used to measure. In squares, it is used to measure degree of lopsidedness in the distribution, and kurtosis is used to measure the degree of tolerance in the distribution. Thirdly, we are focusing on the point what is it. So basically, skewness is an indicator of lack of equivalence in the frequency distribution, and kurtosis is the measure of data which is at the peak of flight in relation to normal distribution. Lastly, we are focusing on the point that what they represent. So skewness represent amount and direction of the skew, and kurtosis explain how tall and sharp the central peak is. So now we are heading towards the application of skewness. So basically, skewness is used in probability theory and statistics. Skewness has benefits in many areas. Many models assume normal distribution, that is, data symmetry about the mean, but in reality, data points may not be perfectly symmetry. So an understanding of the skewness of the data set indicates whether deviations from the mean are going to be positive or negative. Skewness is used in data handling.
such as in stock market, that is with the factor like skewness, variance, covariance are used to predict the market. So basically skewness can be used in any data to find how the data is different from the mean. Now we are heading towards the application of kurtosis. So have an outlook. So basically, kurtosis is a statistical method that used to describe the distribution. It has real life application, especially in the world of economics. Fund managers usually focus on risks and return. For investor, high kurtosis of the return distribution implies that investor will experience extreme returns, that is either positive or negative. In short, kurtosis is used in financial market. And that brings us to the end. I would like to thank you. If anyone has any question, please free to ask. We will do our best to answer.